Okay. Wait. Have you all understood the lesson? Have you all understood the lesson, beta? Children, I'm asking you something. Have you all understood the lesson? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. So it's just a quick recap of the lesson. We'll do this, and then later we'll do the flashcard questions. Okay? Okay. Now you have to say true or false, keeping the lesson in your mind, the content of it. Just say true or false. Tea grows in deserts. False. False. Very good. Tea plants need a lot of rainfall. True. Very good. True. I want others also to participate. Please be vocal. Assam is famous for tea. True. Very good. True. Tea contains fat. False. False. It contains protein. No, ma'am. Yes. So what are the two things it has? What are the two things that it has? One is caffeine and the other is? Tell me. Theanine. Okay, caffeine and theanine. Please don't forget. Emperor Shillong is linked with the discovery of tea. Emperor Shillong is linked with the discovery of tea. True. True or false? True. Okay, farm or tea garden, we'll come to this. Would this happen in a tea garden or not? You have to tell me yes or no. Sorry. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Pruning the plants. Does it happen? Tea Yes, garden. ma'am. True, ma'am. Yes. So say do like this, thumbs up. Plucking the leaves. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Harvesting. Very good. Harvesting wheat. False. No, ma'am. Need for rainfall. No, ma'am. No. Yes, ma'am. No, ma'am. Who said no, ma'am? Yes, ma'am. No, first you, who said no, ma'am? Preeti? It's true, yes. Packing leaves. True. No, ma'am. False. False, ma'am. Packing leaves. False. Are leaves are packed, na beta, they are crushed. Yes, ma'am. Okay? Don't forget that. Okay, then comes home connection. Who makes tea at your home? Ma'am, me. Rutupurna, you prepare tea? You know how to do it? You know how to do it, beta? You said me. Who makes tea at your home? Others, please respond. Harshida, Samriddhi, Preeti, others also. Who prepares tea at home? Say it, beta, unmute yourself. Tell me. Mummy, ma'am. Yes, say it then. When is tea usually prepared? Morning or evening? मैम कौन सा क्वेश्चन चालू है मेरा When थोड़ा is, इंटरनेट प्रॉब्लम I am talking about this one. When is tea usually prepared? Tell me. Morning or evening? Or morning, evening? both मैम मॉर्निंग एंड इवनिंग Say then, beta. Who drinks the most tea in your family? Grandfather. Yeah. father and mothers both Tea. Brother and mother. Who drinks brother? grandmother and father Very good. Okay. Have you seen tea plants in real life? yes ma'am no ma'am yes ma'am no ma'am Some are saying yes, some are saying no. Those who are saying yes, how does it look like? Tell me. ma'am it is so small
Okay, it is small, but what about the entire garden, tea garden? Have you seen those tea gardens? No मैम मैंने वीडियो में देखा है रियल लाइफ में नहीं देखा Real life. मैम मैंने भी वीडियो में ही देखा है फिर Preeti has seen it in real life on the. Did you say Video. real life? नो मैम Okay, no one has No, seen ma'am. it. Okay, fine, no problem. Then give me one word as it comes to your mind. If I say tea, what will you say? Assam No. What is that word which is related? Assam is definitely related, but tea goes with what? Which word is more, suitable for it? If I say tea, what will you say? drinkable liquid It's a drinkable liquid, but you can say tea leaves, teapot, isn't it? Tea buds, मैम yeah? So, like, यस मैम if I say Assam, what Tea. comes here? tea Very good. Yes, Tea. Assam tea, yeah. Bodhidharma, मैम slaves slave, no मैम followers okay, disciples, followers. They are not slaves, beta. सॉरी बोलते मैम वो slaves गलती से निकल गया था they were the disciples, the followers. Okay, you can also say monk. Antioxidants, what comes here? tea Tea. Antioxidants, yes, tea has antioxidants. You can also say healthy, yeah, यस मैम yes, because Yes, it cures some of the diseases. It has that ability, okay, to cure some of the diseases, like even cancer. We have discussed this. What's in the basket? Can this go into a tea basket? Now you have seen a tea basket. Must have seen it in the video or picture. It's conical in Yes. shape. Yes, It's ma'am. conical in shape, right? Young leaf, tea leaves. Does it go in the basket? Tea basket. Not the basket, tea basket. Does it go in the basket? Tea basket. Tea टी basket. basket Okay. Tea buds. Come मैंगो on, fast. No, Mango. no. Tea No, buds. I'm No, talking about ma'am. tea. What? No, ma'am. टी basket Does it Tea go in basket. tea basket? यस मैम Then say tea basket. Mangoes. Does it go in tea basket? no मैम मैंगो No. no मैम Flushes. tea basket Very Tea good. Tea Tea basket. seeds. Tea seeds. टी basket no मैम no मैम Yes, it tea is a basket wheat. No, it doesn't go. Tea seeds, why will it go in No, ma'am. tea basket? Tea seeds ma'am. will not go with the. What we pluck goes No, into ma'am. the basket, na? Wheat doesn't go in the tea basket. Very good. no मैम Okay. Then come on. Name one tea growing region. It has to be fun. Assam Very good. basket. Two, other than Assam, two more are there in the lesson. Come on, tell me. Other than Assam, two more states have been mentioned from India. Tell me, please, fast. It is rapid fire. Not that you don't have to take time in this. One is Darjeeling, West Bengal, Yes, ma'am. did that. And the third one is Nilgiri, Tamil Nadu. Remember we did this? Please keep revising your lessons, okay? What is the botanical name of the tea plant? Tell me. Come on. मैम आसाम No. What is the botanical name of tea plant? It starts with C. Camellia sinensis Sinensis. Very good, very good. Who discovered wild tea plants in Assam?
Who discovered it? It was growing somewhere, the upper part of the Brahmaputra river. And from there, we learned the art of, growing tea leaves, tea plants. So who discovered that? It starts with R. East Company. No, beta. This is one individual. I'm not talking about any company. Tea cutting. No. Who discovered it? What? Botanist Robert. Yes. Robert Bruce. Yeah, Robert Bruce. I hope I'm saying the correct and giving you the correct answer. It's Robert Bruce or not? Check it from your book. You all have your books with you? Yes, ma'am. So please check. Is it Robert Bruce? Tell me fast. जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं लगाना है. मैम यही है. यही है ना? Why are tea plants pruned? Okay. Why are tea plants pruned? Assam. Assam. Why? I said, why are they pruned? I'm not asking where. मैम क्योंकि Why? अगर मतलब क्यों? प्लांट्स बहुत बड़ा हो गया है तो हम उसे तोड़ नहीं सकते इसलिए. Yeah, it will grow into a big tree, beta. So we can't pluck the leaves like that. We have to take only 1.5 inch or maximum 2 inches of bud or the leaf. Okay? So that cannot be easily plucked if it grows in size. They keep it at what level? At the 3 feet, which comes very close to your waist. Okay? What are young tea leaves called? What are young tea leaves called? मैम मैम वो प्लांट बड़ा हो Young, गया तो हमें टी के प्लांट लीफ को हम पी नहीं सकते. मैंने तो ये बोला ही नहीं. यंग टी लीव्स को हम क्या कहते हैं बेटा? What are they रेडिकल्स. called? Radicals. They are called radicals. Are you sure? नो मैम सॉरी. Radical means a big change. Just find out the young tea leaves. What are they called from your textbook? Okay? We'll come back to this. Right? Okay? Now you have your textbook with you. I'm going there. Please find the answer for that. Let me know. Okay. So please open your textbook and okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. नो मैम. Who said no, न्यूली ma'am? ग्रो मैम. Can you see the screen, beta? नो मैम. Yes, ma'am. यस मैम. It's clear. Yes, ma'am. Okay. Now, the most important thing is we are looking at question number 4. The rest of the questions are easy. You can easily do it. Okay. For instance, they say list all the names of geographical places mentioned in the passage. Passage means the text. So you know that they have talked about China, Russia, Japan, Korea, isn't it? India. These places have been named. Okay. So you can write those. Making smaller words using the letters in the given words like investigations. So you have to just make words with at least 5
I mean, as many as you can, but they say that at least 5 words each. With each word, you have to make 5 words each. For instance, if I say investigations, so you can make, what words can you make out of it? You can make you can make investigate, you can make some other words also, like you can pick up T, E, and A and write T also, isn't it? So you know how to create words, more words out of one word. आपको एक वर्ड से और वर्ड्स बनाने आते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो आप बना लोगे. अभी मुझे आप ये बताओ, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 and tell me the meaning, dictionary meaning of these words. They have been used in your lesson. Infusion, what does it mean? Infusion. And please, if you have your pencil with you, write the meaning also. What is infusion? I think it has been, this word comes in your second paragraph of your lesson, if I am not wrong. What does it mean, infusion? Infusing tea leaves in hot boiling water. What does it mean? मैम जो टी के केमिकल्स होते हैं ना वो बॉईल करते हुए निकल जाते हैं. नहीं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं ना बेटा. So infusion ma'am. means mixing. Infusion means you mix. Mixing. Yeah. So when you are boiling water, in hot boiling water, obviously the tea leaves, they leave their aroma, they leave their taste, isn't it? When we are preparing tea. So that is called infusion, means mixing. Please write there, mixing. What is restorative? Restorative. What does it mean? What is the meaning of restorative? When we restore something. मैम मतलब जो हमारी मतलब आरोग्य, मतलब जैसे कि जो हमारी वेल्थ होती है उसको फिर से प्राप्त करना. Very good, Sai. And that is called bringing it back. Bringing something back is called restorative. समझ गए? किसी चीज को वापस लाना. Sai is absolutely right. I hope you have understood. आप कहीं पे अपने किताब में ये वर्ड के मीनिंग्स लिख लो बेटा. Inscriptions. Third word is inscriptions. You inscribe something. What does it mean? मैम किसी चीज को दिखाना मतलब इंस्क्राइब करना. नहीं बेटा, आप इंस्क्राइब करते हो when you are carving letters or words on a metallic thing, thing made out of wood. ठीक है, आप उसको कार्व करते हो, मतलब उसके अंदर उसके इंस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना. गढ़ते हो ना? हाँ बोलो साइन बेटा, बोलो. मैम वो इंस्क्राइबिंग का मैं बता रही थी कि वो जो मतलब पत्थरों पे जो ऐसे लिखा करते हैं ना पहले जमाने में, उसको हाँ. शिलालेख. हाँ, तो आप कार्व करते हो. कितनी बार भगवान जी की मूर्ति या कोई भी चीज आप कार्व करते हो. ठीक है ना, कोई मूर्ति कार्व करना. राइट. सो दैट इज. अब यहाँ पे जब हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हम कुछ लिख रहे हैं. ठीक है, तो कुछ लिख रहे हैं. समझ गए? अगर हम कार्व कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में देखा होगा, केव पेंटिंग्स के बारे में सुना है. अर्ली मैन, दे यूज्ड टू पेंट, आई मीन ड्रॉ एंड पेंट ऑन द स्टोन्स. केव के जो स्टोन्स होते थे उसपे वो लोग स्टिक फिगर्स बनाते थे. सुना है आपने अर्ली मैन का? देखा भी होगा. Yes, ma'am. So what Ma'am, those stone पे stick figures they used to carve बेटा.
उसके ऊपर पानी भी अगर पड़ जाता था तो वो नहीं खत्म, आज तक नहीं खत्म हुआ. It is still there. So when you are writing something in that way, you are carving it out, then it is called inscription. ठीक है? Okay. Radicals. What does it mean, radical? मैम फंडामेंटल. Fundamental change, not fundamental. It means a big change. समझ गए? Radical मोनिका means a big change. मैम बदलाव. मूलिका इसका मूलिका वो क्या होता है बेटा? मैम उसके नीचे की मूले. अच्छा, मुझे नहीं मालूम है बेटा, बट इसका मतलब होता है बहुत बड़ा बदलाव. रेडिकल्स का मतलब इट्स अ रेडिकल चेंज, मींस अ बिग चेंज. ठीक है? और अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स को भी रेडिकल्स बोलते हैं. आई डोंट नो साइंस में आपने पढ़ा है कि नहीं. ठीक है, आप अपनी साइंस मैम से पूछ सकते हो कि मैम रेडिकल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है? She will Okay, ma'am. explain you. She will explain you better. But अगर हम लैंग्वेज की तरफ से देखते हैं ना, तो it means big change. Okay? Connoisseurs. मैम Connoisseurs किसी कौन होते चीज में बहुत तज्ञ हो और बहुत होशियार हो किसी चीज में. हैं? Yes, very good ऋतुपूर्णा, very good प्रीति. इसका मतलब कि कोई एक्सपर्ट होना, किसी भी फील्ड में होना. So sometimes we have art connoisseurs. जैसे कि कोई पेंटिंग बनाता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है. सो यू हैव दोज क्रिटिक्स जो आते हैं और आपका प्रोग्राम देख के आपका रिव्यू लिखते हैं, राइट? सो दे आर कॉल्ड कनोशियस. कोई भी जो टिप्पणी करते हैं, they do it in a very critical manner. Connoisseurs are not appreciate, they don't appreciate all the time. मतलब they might appreciate but in a very different way. मतलब वो आपकी गलतियां भी दिखा देंगे और साथ में appreciate भी कर देंगे. So they are called connoisseurs. ठीक है? So this is clear Yes, to ma'am. everyone. These are some of the new words that have appeared in your lesson, and I want you to know the meaning. इनके meanings आ सकते हैं. Okay, then this is the you have to complete these lines. Camellian sinensis is an evergreen plant that grows in where? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. Very good, very good. The teas we buy are usually classified according to, साइज. yes, which size which state grows the bigger size of leaf, tea leaf? इंडिया और चाइना. बच्चा मेरा, it is in India, it is only Assam. जहाँ की चाय पत्ती की जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है. ठीक है? चाइना वाली बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी चाइना की होती है. So don't say India and China, okay? Okay. In many countries around the world, tea drinking is an dash. Tea drinking is a dash. हैबिट. It is a habit or it can be an occasion also. कभी कभी किसी ओकेजन पे भी तो चाय को बड़ी महत्वता दी जाती है ना, महत्ता दी जाती है ना. So it can be a social occasion or it can be a habit. Both. Yes, ma'am. ठीक है? In okay, our what, like we discussed, China में they had organized an event, a tournament of tea drinking, tea making and tea tasting. याद है? मैंने बताया था. जापान में टी को एक बड़ा ही एक मतलब दे ना, नॉट सेलिब्रेट बट इट्स लाइक बहुत ही उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में दे डू इट. यस मैम. है ना? ठीक है? आवर बॉडी प्रोड्यूसेस केमिकल्स कॉल्ड व्हाट? फ्री रेडिकल्स. They are called, yes, free radicals. Yes. Prepare a flow chart here. Plantation के बाद क्या आएगा? After plantation.
मैम वाटर डालना। Young leaves, they grow. Young leaves grow. पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं ना, तभी तो उसको क्योर्ड करते हैं। क्योर्ड से पहले तो पत्तियां निकलेंगी ना बेटा। यस मैम। अगर पत्ती ही नहीं होती तो क्योर किसको करेंगे। उसके बाद इट इज प्रोसेस्ड, ठीक है। देन व्हाट, बिफोर सेलिंग इट टू अस, देन दे आर प्रोसेस्ड एंड पैक। पैक्ड एंड देन दे आर सोल्ड टू अस। तो ये वाला आप कर लोगे। आप इसको मैं यहीं पे रोकती हूँ। ओके ओके मैम। ओके मैम। I will do the flashcards. अरे एक सेकंड, मैम क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करना है? हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ करना है। Now, can you see this? यस मैम। यस मैम। Okay, well, just 1 minute. Right. So you will give me the answers for this. What is the botanical name of the tea plant? कैमेलिया sinensis। Very good, very good. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. Next, which parts of the tea plant are used to brew the beverage? You know what is beverage? यस मैम। Drinkable, है ना, liquid, drinkable liquid. So, which part of the tea plant are used to brew the beverage? लीव्स। Yes. लीव्स। Leaves and what? What else? Leaves के अलावा भी कुछ है? वाटर। हाई, लीव्स के अलावा और क्या है? शूट्स भी तो होते हैं ना बेटा, उसके छोटे छोटे शूट्स नहीं होते हैं? When you pluck the leaves, उसके साथ छोटे छोटे शूट्स आते हैं. I'm not talking about stem. शूट जो उसके आगे का कोमल सा हिस्सा होता है. पत्तियां निकलने से, पत्तियों से जस्ट पहले जो कहते हैं ना, they pluck only 1.5 or 2 inches of the leaf. तो उसके साथ शूट भी तो आता है ना बेटा. यस मैम। Shoots and leaves. Okay. Tea plants require a minimum of how much rainfall annually? बताओ कितनी 100 to 125 centimeter of Very rain। good, very good, very good. What type of soil acidity do tea plants prefer for optimal growth? What type of Acidic soil soil. acidity? Acidic soils। Acidic soil, complete acidic soil. Why are many high quality tea estates located on hill slopes at the elevation up to 1500 meters? वो 1500 meters पे क्यों ही वो high quality tea estate होता है? 1500 मीटर की हाइट पे. मैम ऐसा कहा जाता था कि कुछ ऊंचा होगा, अगर टी प्लांट्स ऊंचे जगह पर उगाए जाएंगे तो उसमें बहुत टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा। Flavor is taste only, beta. It has Yes. nice aroma, it grows better, and it has got good flavor. Flavor होता है taste, aroma होता है खुशबू. ठीक है, समझ गए? यस। Okay. What are flushes? What are flushes? मैम जो बर्ड्स होते हैं लीव्स के उसको फ्लश कहते हैं। So how much? It is just one
1.5 or 2 inches of buds, right? They are called, Yes, which are ma'am. which are plucked, they are called flushes. How frequently does a new flush appear on a tea plant during the peak growing season? Monsoon. Every Huh? 7 to 10 days. Yes, every 7 to 10 days. Very good. Why are tea plants in commercial gardens pruned to a height of about 3 feet? Because we have to easily plucking of the leaves. So that they can be easily plucked. Don't say we can. Say so that they can be easily plucked. Okay? Which specific type of tea is characterized by having the largest leaves? Assam. Assam? What Assam? You have to say it complete. Say Assam type of Assam tea. Okay? Okay, ma'am. Which specific type of tea is characterized by having the smallest leaves? Chin. China. Huh? Chin, ma'am. China. China. Beta. China has the China. smallest one, na? Yeah. And what is, by the way, the middle one, which is neither big nor small? Nigeria. Cambodia. Cambodia. Cambodia, right? Which type of tea leaf is classified as being of intermediate size? What is intermediate? Neither big nor small. It's somewhere middle. So what is that? Cambodia. Cambo type. Okay? Okay. Name the 3 distinct tea growing regions in India. I just now told Assam. you. Yes. Assam, Darjeeling. Thai, Ma'am, Darjeeling. northeast. Where is Darjeeling? Where is Darjeeling? Ma'am, northeast. Northeastern India. West Bengal. Say West Bengal. Beta northeast में तो असम है. Extreme northeast में. So say West Bengal. Darjeeling is in West Bengal, na? And Ma'am, the third one, मैम पर यहाँ पर दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. yes, ma'am. Northeast नॉर्थ India. ईस्ट दिया है तो उन्होंने असम के लिए तो एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट बोला है. वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ आई आस्क यू वेयर इज दार्जिलिंग, यू नीड टू टेल मी इट इज इन वेस्ट बंगाल. ओके, Okay, Yes. ma'am. दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, असम हो गया, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल हो गया, एंड थर्ड इज Nilgiris. नीलगिरी. नीलगिरी. Purna, say it again. Nilgiri. It is Nilgiri. Nilgiri hills है ना? So Nilgiri in South India. साउथ Tamil Nadu. इंडिया. India. It can't be whole of South India. It can't be whole of South India, na? We have to be specific about name the state where it grows. Where in South India? तमिलनाडु. Yeah, Preeti, very good. You have to name that place. Don't say northeast or south. They are not asking you the directions or directions. You have to name these 3 states. Please keep them in your mind. Assam, Tamil Nadu, and West Bengal. Okay? Okay, ma'am. Where is Darjeeling tea growing region located in India? Come back to the same thing. Where is the Darjeeling tea growing region located in India? North East India. बच्चे मेरे, आप फिर वही गलती कर रहे हो. They are not asking you to tell the directions. You need to tell me the name of the state. What state is it? Assam. Assam नहीं है बेटा. Darjeeling. मैम नॉर्थ. Yes. Where is Darjeeling located?
It's West Bengal. What is it called? पश्चिम वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल. हमारा ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश है ना, तो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है. वेस्ट बंगाल इज द पार्ट ऑफ, इट इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इजंट इट? इंडिया Yes, का एक ma'am. स्टेट है ना, यस तो उसके अंदर वहां पे दार्जिलिंग लोकेटेड है. इट्स अ हिली एरिया और वहां पे टी ग्रो करता है. So don't confuse between West Bengal and Assam. They are two different states. They both are in Northeast, but they are two different states. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, मुझे Okay. Where is the Nilgiri? Where is the Nilgiris tea growing region located in India? Come on, don't tell me South now. Tamil Nadu. Yes, Sai, very good. This is how you have to answer. Which two chemicals give tea its stimulating quality and distinctive flavor? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो चाय को बिल्कुल डिस्टिंक्टिव बनाती हैं? Chemical. And and theanine. Yes, theanine. Theanine and theanine. Yes. Tea is a refreshing drink because it contains no carbs, I mean carbohydrates, proteins, or फैट very good. Fat. Excellent. According to Chinese legend, who is the father of Chinese agriculture and medicine who discovered tea? इसका नाम क्या है बताओ? अभी हमने किया Emperor Shennong. Emperor Shennong. Very good. How did Emperor Shennong first discover the flavor of tea? Agriculture and medicine. No, Rutupurna. How did he discover the flavor of tea? Emperor Shennong. Where was his servant sitting? Explained by the unknown plant and its amazing flavor. No, but you have to give me a complete answer, na Sai? Ma'am, when a servant was boiling some water for the emperor to drink, then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. Yes. And that is how they discovered the flavor of tea, right? What Yes, ma'am. medical Yes. Good. What medicinal property did Emperor Shennong discover tea could be used for besides healing? Heal तो करता ही करता है, कोई चोट लगती है कुछ है तो आप चाय पीते हो, है ना? उसके अलावा और क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी, बताओ? Restorative property. रेस्टोरेटिव तो हो गया, बट उसके अलावा कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है? वो आपकी तबीयत तो Antidote to certain poisons. यस, कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिसका वो एंटीडोट है, वो आपको ठीक कर देता है. इफ यू हैव टी देन यू आर क्योर्ड ऑफ दैट. ठीक है? हु वाज द बुद्धिस्ट मंक credited with being the first to use tea as a medicinal drink to stay awake? क्या नाम था उस monk का? उसने he had to do meditation. For meditation, he had to remain awake for hours together. उसको बहुत देर तक बैठना था ना? Yes, Bodhidharma. Yes. How did Bodhidharma consume tea leaves to stay alert during meditation? उसने कैसे consume किया चाय की पत्ती को to remain awake during the time of meditation? By chewing the leaves. Yes, by chewing the leaves. Very good. How did tea seeds and leaves first reach Japan from China? How did tea seeds and leaves
first reach Japan from China? Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. Yes, all the Japanese disciples who were studying there, they saw, I mean, what they were, the Chinese. एक second, beta, 1 minute. Yeah. So they were following the, the teachings of the Buddhist, the monk, and from there they carried this idea of the fact about the tea seeds and the leaves to their respect, to their country. Okay. Okay. Which Chinese emperor was so focused on tea research that he failed to notice the Mongolian invasion? Remember मैंने क्या कहा था कि Mongolia was जो gateway था, lot of negotiation was done related to price, its price. ठीक है, negotiation मतलब हाँ कि कम कर दो इसके पैसे, ये वो जो भी बाइंग था वो वहां हो रहा था. तो मंगोलिया ने अटैक कर दिया चाइनीज पे, they invaded their country. Okay, so which Chinese emperor was so focused? वो कितना लॉस था चाय के. Yes. What was the original Chinese character used in early inscriptions to describe tea? Emperor who What was the original Chinese character? Characters थे ना, कुछ letters थे which were used. चा नहीं, उससे पहले कुछ और था. It starts with T, TU और बीच में U. TU. Yes? Okay. The Yes. modern Hindi TU. word chai is derived from which Chinese character? Cha. Yes. When did the British begin to establish tea plantation in India for pleasure drinking? When did they start? Which century was it? In 1770s. No, that becomes 18th century. 1823. 19. Yes, science. 1823. Science, right. No, Preeti, it's not 20th, it's 19th century. Yes. In 19th century, they started this tea plantation in India. Okay. Who discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley in 1823? उसी के बाद ही हुआ था ना, so it is 19th century. Who discovered tea plant growing wild in the upper Brahmaputra valley? Where is Brahmaputra located? Assam. Assam. Yes, Assam. And who was the one who discovered it? We have you named it also correctly. The botanist Robert Bruce. Yes, excellent. Very good. When was the first shipment of Indian tea from Assam was sent to England for public sale? When was it? The first shipment. Shipment का मतलब होता है पहला consignment जो गया था इंडियन चाय का असम से इंग्लैंड. ठीक है, क्योंकि तब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे. The white people were there for public sale. उन्होंने वहां जाके बेचा था उसको, असम की चाय ले जाकर. तो पहली शिपमेंट कब गई थी? May 1838. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Okay. Tea contains specific antioxidants called dash that protect the body against the free radicals. Flavonoids. Yes, flavonoids. In Chinese tea ceremonies, why are cups only filled halfway? वो चाय को आधा ही वो उसको वो करते हैं, फिल करते हैं कप को.
क्यों? What is that? What does it stand for? आप समझे? चाय, हम लोग चाय पीते हैं ना तो पूरा कप भर लेते हैं. चाइनीज जब भी चाय पीते हैं दे ओनली फिल हाफ ऑफ द कप. कप को Ma'am, आधा ही because भरते हैं, आधा. Chinese believe that the rest of the cup must be filled with friendship and affection. Very good, Rutupurna. Are you reading it from the book directly or you already have this in your mind? मैम बुक में से रीड किया. बुक में से रीड कर रहे हो, लेकिन याद भी साथ साथ करो, ठीक है? ओके Okay. मैम. What is the name of the metal kettle used to make and serve tea in Russia? What is the name of the metal kettle used to make and serve tea in Russia? वियतनाम. नहीं. Samovars. Yes, Sanovar. बेटा आप अगर अपनी किताब में से पढ़ के भी आंसर दे रहे हो, इट्स गुड कि आप समझ के कर रहे हो, बट आई वांट एवरीवन टू रीड द लेसन केयरफुली, क्योंकि इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए बच्चे. Which country is known for producing lotus tea and jasmine tea? And please, by the way, मैंने आपके साथ 2 वीडियो शेयर करी थी. One was the pre and the second was post. I mean, post मैम video. वियतनाम. वियतनाम. मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं. आप वो दोनों वीडियोस को देखिए, तो उससे भी आपको लेसन बहुत क्लियर हो जाएगा. It covers all the main points. ठीक है? मैम मैंने देखी थी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो जो बच्चे ने देखी थी वो आंसर दे रहा है ना, बाकी चुप हुए. सो दिस इज वियतनाम. यस, वेरी ट्रू. व्हाट इज द नेम ऑफ द पाउडर्ड green tea used in Japanese tea ceremonies? I told you ना, जापान हरी चाय पीते हैं, उसको क्या कहते हैं? Matcha. Matcha. Yes, matcha. What tool is used in Japan to mix powdered tea with boiled water? जापान में उस क्या चीज यूज करते हैं? Bamboo. क्या क्या? Bamboo whisk. बैम्बू विस्क. Dirty बैम्बू से बना हुआ विस्क होता है. water. Okay. Yeah. In Ma'am? India, what? Yeah. Just give me 1 minute, बेटा. आप तब तक एक क्वेश्चन. In India, what does offering a cup of tea to a guest traditionally represent? Tell me. Yeah, बच्चे. Rutupurna, Harshita, Apurva. In India, what does offering a cup of tea to a guest traditionally represent? अगर हमारे घर मेहमान आता है, हम उसको चाय बना के देते हैं, वो क्या शो करता है? थैंक यू. हमारा गुड बॉन्ड. हाँ, हॉस्पिटैलिटी. हम कहते हैं ना, हम आओ भगत करते हैं किसी की. हम जब कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, हम उसको चाय बना के देते हैं, isn't it? इंडिया में तो हम उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना. सो दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी. ठीक है? अब अगर याद ना मतलब याद रहे तो लिख लो आप कहीं पर. What ingredient is often
brewed with tea in India during the rainy season for its medicinal properties? Ginger. Yes, adrak. Very good. Then name one of the spices commonly added to Indian tea to enhance its taste. One of the Indian spices. cardamom Yes, cardamom Sai, cardamom yes. Cardamom हिंदी में क्या कहते हैं उसको बेटा? I don't know ma'am. It's called इलायची. आपने छोटी इलायची। इलायची देखी है, हरी वाली? Yes, ma'am. इलायची डाल के हम चाय बनाते हैं ना, which is a spice. हम कभी कभी उसको खाना बनाने में भी यूज करते हैं, राइट? तो हम उसको स्पाइस बोलते हैं, ठीक है? इन सब वर्ड्स के मीनिंग अगर आपको नहीं जान रहे हो तो अपनी किताब में, टेक्स्ट बुक में ही कहीं कहीं पे लिख लो पेंसिल से, ठीक है? Yes, ma'am. According to practitioners of tea ceremonies, what is one emotional benefit of drinking tea? बताओ. जैस्मिन टी। According to the practitioners of tea ceremonies, चाय से क्या होता है? एक इमोशनल बेनिफिट भी है. And what is that emotional benefit? अगर हम चाय पीते हैं, बताओ. हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को वो कैसे मतलब कैसे ठीक करता है? मतलब जब हम चाय पीते हैं ना तो पूरी फैमिली पीती है, मूड फ्रेश हो जाता हाँ, सो इट टेक्स अवे आवर लोनलीनेस. कभी कभी हम चाय जब पीते हैं, अगर हम अकेले भी हैं और हम चाय पीते हैं तो हमारे अंदर से जो हम लोनली फील करते हैं, कभी कभी हम अकेलापन फील करते हैं, तो वो नहीं फील करते. ये हमारे इमोशंस को सूद करता है. समझ गए? हमारे इमोशंस को Yes, सूद ma'am. करता है. सो इट हैज एन इमोशनल वैल्यू. मेडिसिनल वैल्यू तो हमें जान गए, इमोशनल वैल्यू भी है. How is tea typically served in most Indian homes regarding temperature and additives? कैसे सर्व करते हैं हम इंडिया में चाय जब बनाते हैं? देखो, बाहर की कंट्रीज में जब चाय बनाते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर दूध नहीं डालते हैं. यू नो दिस? है. यस मैम. उसको हम ब्लैक Yes. टी बोलते हैं, है ना? ब्लैक टी बोलते हैं ना. दे ड्रिंक लॉट ऑफ ब्लैक टी. बट हमारी ही कंट्री है जहाँ पे चाय को जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर इलायची भी, अदरक भी, चीनी भी, दूध भी, सब डालते हैं. फेनिल ये सीड. कंकॉक्शन जो है, इतना बड़ा कंकॉक्शन जो है, ये वहाँ बाहर की कंट्रीज में नहीं होता है. वो सिंपली दे ब्रू द टी लीव्स एंड दे ड्रिंक दैट. द वाटर विच इज एक्चुअली वो काला सा होता है. तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग तो बहुत कुछ डालते हैं. सो लॉट ऑफ मिल्क एंड शुगर इज एडेड टू टी व्हेन इट इज मेड हियर इन इंडियन होम्स. समझ गए मैं क्या कह रही हूँ, या दोबारा समझाऊं? ओके, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मराठी वर्ड फॉर टी? तो चाह. चाह, ठीक है? यस, यस. ओके, आपका क्लास का भी अब टाइम हो गया है, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी मैंने आपको एक बहुत अच्छे से एक एक चीज, एक एक लाइन कराई है इस लेसन की बेटा. प्लीज रीड इट, ठीक है? अगर आपको कोई भी मुश्किल लगती है, प्लीज लेट मी नो. आई शेयर वन वर्कशीट विद यू एंड इट्स रिसोर्स मटेरियल. उसको पढ़ो, वीडियोस देखो एंड जो वर्कशीट है उसको करो. नीचे आंसर्स होते हैं, डोंट लुक एट द आंसर्स. फर्स्ट यू डू इट ऑन योर ओन, बुक बंद करके. ऋतुपूर्णा,
बुक खोल के नहीं करनी है वर्कशीट, ठीक है। एंड नाउ, मैम हाँ बोलो बेटा।